Good morning, dear students. This is the SST book of class 6, and we were discussing the first chapter of geography, which was our Earth in the solar system. So, our next topic in this chapter is other celestial bodies. We have already discussed about the planets and the revolution and rotation process, and we have also discussed about the satellites. Now we will discuss about some other celestial bodies, which is first is meteoroids. They are shooting stars that crash into Earth atmosphere. वो shooting stars होते हैं, ये भी एक टाइप के stars होते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्रैश करते हैं. And they also move about in the space, and they also go around the sun. They will have a revolution around the sun. When they come near the earth atmosphere, as a result of friction, they begin to glow and are called as meteors. और जब वो अर्थ के करीब आते हैं, एटमॉस्फेयर के करीब आते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से वो चमकने लगते हैं. दे आर कॉल्ड एज मेटियोर्स. एंड जब ऐसे शूटिंग स्टार्स जो होते हैं, दे इफ़ दे आर स्टिल इन द सोलर सिस्टम बट दे आल्सो एंटर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, देन दे आर कॉल्ड meteoroids. एंड आफ्टर एंटरिंग इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, हो सकता है कि जो meteoroids होते हैं पार्टली वो क्या हो जाए, बर्न अप हो जाएं. एंड फ्रैगमेंट्स, जो फ्रैगमेंट्स पहुँचे ग्राउंड तक, दोज फ्रैगमेंट कैन बी नोन एज meteorites. Now next one is asteroids. Between Mars and Jupiter lies a belt of small bodies called asteroids. Mars और Jupiter के बीच में एक belt है small bodies का, that is known as asteroids. And the largest of these teeny planets is Ceres. इन सब का जो सबसे बड़ा planet है वो Ceres है. Many scientists and astronomers believe that asteroids are fragments of planet which exploded long time ago. बहुत से scientists और astronomers ये believe करते हैं that asteroids are the fragments of planet and they have exploded a long time ago. Next topic is comet. They are also a glowing object and made up of ice and dust. They have long tails, and we can see them streaking around in the night sky. Comets spend most of their time सोलर सिस्टम में पहुंचने के लिए वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं. दे फॉर्म अ टेल, जैसा कि मैंने बताया कि उनका एक टेल होता है, वो फॉर्म करते हैं. एंड जब वो सन के नियर पहुंचते हैं, देन दे स्टार्ट टू ग्लो, तब वो चमकने लगते हैं. एंड देन दे फॉलो अ लॉन्ग पाथ अराउंड द सन. दे टेक ईयर्स टू कंप्लीट दियर ऑर्बिट, और बहुत साल लगते हैं उनको अपने ऑर्बिट कंप्लीट करने में. एंड जो मोस्ट फेमस कॉमेट है हैलीज कॉमेट, वो हर 76 ईयर्स बाद दिखता है. आफ्टर एवरी 76 ईयर्स वी कैन सी द मोस्ट फेमस हैलीज कॉमेट. एंड किसके नाम पे ये रखा गया है? इट इज़ नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश साइंटिस्ट एडमंड हैली, हु फर्स्टली डिस्कवर्ड इट. जिन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया था एडमंड हैली ने, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है. एंड इट वाज लास्ट सीन इन 1986. इसको कब देखा गया था? 1986. तो इट मीन्स दैट अब हम इसको कब देख पाएंगे? 1986 से विल एड 76 ईयर्स, मतलब 14 ईयर्स 20th सेंचुरी में, और 62 ईयर्स 21st सेंचुरी में. इट मीन्स दैट 2062 विल सी द हैलीज कॉमेट. नेक्स्ट वन इज डॉर्फ प्लैनेट. डॉर्फ प्लैनेट स्फेरिकल हेवनली बॉडीज होते हैं, बहुत छोटे होते हैं एक प्लैनेट से, और ये सन का ऑर्बिट, ये भी सन के ऑर्बिट में रहते हैं. इट डिफर्स फ्रॉम सैटेलाइट्स, और सैटेलाइट से डिफरेंट होते हैं, और इनका खुद का इट हैज़ देयर ओन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड दे ऑर्बिट द सन इंडिपेंडेंटली. सिंस its discovery in 1930, as it has been discovered in 1930. प्लूटो को एक planet considered किया जाता था, but when the dwarf planet had been discovered, Pluto is considered as the dwarf planet. From the year 2006, the IAU, the International Astronomical Union body जो है, they have adopted a new definition of a planet in which Pluto does not fit. एक planet की नई definition आई और Pluto उसमें fit नहीं था. That's why it has been reclassified and it has been known as dwarf planet. Ceres and Eris are two other dwarf planets.
except Pluto. Ceres और Eris भी दो dwarf planet है. Now we'll discuss some more thing about our Earth. Earth, we had already discussed that it is the third planet from the Sun and fifth largest planet, and also called blue planet because of the water surfaces on it, as it reflects a mixture of blue and green light. Also blue because of ocean and green because of its vegetation. And shape of earth is like a sphere. It bulges at equator and flattens at the pole. The shape is also unique, and the Greek called it geoid or earth like shape. जो अर्थ का शेप है वो स्फेयर का है और इक्वेटर पे ये बल्ज करता है और पोल्स पे फ्लैट हो जाता है. एंड ये बहुत यूनिक शेप है और ग्रीक्स इसको क्या कहते हैं, दे कॉल्ड इट जियोइड और अर्थ लाइक शेप. द अर्थ इज एन अर्थ एक ऑप्टिमम डिस्टेंस पे है, सन से एक ऑप्टिमम डिस्टेंस पे है. और यही रीज़न है कि ना बहुत ज़्यादा यहाँ गर्मी है ना बहुत ज़्यादा ठंडी है. और जो मीन सरफेस है, जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है वो 14 डिग्री सेल्सियस है. And next, when we come to, and earth is the only planet in the universe which supports life. अर्थ ही एक ऐसा planet है यूनिवर्स में जिस पे लाइफ पॉसिबल है और कंडीशंस जो हैं वो लाइफ एग्जिस्टिंग के लिए सुटेबल हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, suitable temperature, breathable atmosphere, and due to the presence of oxygen and some supporting gases, we can breathe on the earth. Now breathable atmosphere, and it will be the next topic of this chapter. जो लिविंग बींग्स हैं उनको ब्रीदिंग के लिए दे नीड ऑक्सीजन on the earth, and plants also need carbon dioxide to prepare their food through the process of what? Photosynthesis. They prepare their food by the process of photosynthesis, so they need carbon dioxide, and which is also present on the earth. Moreover, the presence of ozone in the earth atmosphere. In the earth atmosphere, ozone layer is present, which protect plant and animal from the harmful ultraviolet rays of the sun. जिससे हम लोगों को भी और प्लांट्स एनिमल्स को भी जो अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन है उससे हमको ओजोन लेयर सेव करती है. अभी रिसेंटली बिफोर दिस लॉकडाउन वी कैन से कि जो ओजोन लेयर थी वो बहुत ज़्यादा उसमें मतलब होल्स हो गए थे, बड़े होल्स हो गए थे. बट ड्यू टू दिस लॉकडाउन जो ओजोन लेयर के होल्स थे दे हैड बीन फिल्ड अप, somehow they have been filled up because इतने दिन से पॉल्यूशन नहीं हुआ. दैट्स वाई द ओजोन लेयर होल्स हैड बीन फिल्ड अप, एंड दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस. वाटर भी बहुत नेसेसरी है, और ऐसा ही एक अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ वाटर, लिक्विड वाटर अवेलेबल है. और वाटर और भी प्लैनेट्स पे भी पाया जाता है लेकिन वो फ्रोजन फॉर्म में होता है, आइस फॉर्म में होता है. लास्ट टॉपिक है मॉडरेट टेम्परेचर. अर्थ का जो टेम्परेचर है एक एवरेज टेम्परेचर है, 22 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर होता है. एंड इट इज़ सुटेबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एज वेल एज फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. एंड द अदर प्लैनेट्स जो हैं वो या तो बहुत ज़्यादा हॉट हैं या तो बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं. सो नाउ वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर. In the next class, we'll start with the next chapter. Till then, goodbye, take care, see you all in the next class. Stay home, stay safe, and don't forget to subscribe my YouTube channel.